Hello students, welcome back to the IELTS Gurukul Online, and I really hope your IELTS classes are going very well. And today we will discuss causes and effects essay. As you all know, in this essay you have to write introduction, body paragraph 1, body paragraph 2 and then conclusion. First of all, we will discuss how to write introduction in causes and effects essay. There are three things to remember while writing introduction of causes and effects essay. First of all, you have to write general line. If you have a relevant general line, then you can write, and if you haven't relevant general line, then you avoid that, because general line is totally optional. Then second thing is paraphrase the statement. Paraphrase the statement means the statement is given to you and you have to paraphrase that while using some synonyms. Okay, then thesis line. I will tell you what's the thesis line of causes and effects essay. चलिए thesis line देखते हैं causes and effects essay की. So here is your thesis line of causes and effects essay. This essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequences of this worrying trend. Means ये जो ऐसे है उसमें जो कारण क्या है कि जो मतलब कि जो हो रहा है उसके क्या कारण है और उसके जो रिजल्ट्स हैं, वरिंग रिजल्ट्स मतलब चिंतापूर्ण रिजल्ट्स हैं उस ट्रेंड के, वो भी आप उस ऐसे में डिस्क्राइब करोगे. तो ये थीसिस लाइन है जो आपको राइट डाउन करनी है अपने कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऐसे में. ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स आप फॉलो कीजिए इस थीसिस लाइन को. आप इजीली से इस फॉर्मेट के साथ 5 बैंड्स टास्क 2 में इजीली से ले सकते हो. चलिए स्टूडेंट्स आगे BP1 की तरफ चलते हैं. BP1 आपने कैसे लिखना है, ये कनेक्टर है जो आपने BP1 के पहले यूज करना है टू बिगिन विद. देन देयर आर न्यूमरस कॉजेज ऑफ दिस फिनोमिना. One of the most prominent reason is that. Then you have to write your prominent reason here. After that, another main cause is that. Then second point is here. Then eventually. Eventually means finally. जो आपने अपना थर्ड पॉइंट लिखना है उसके साथ आपने ये कनेक्टर यूज करना है इवेंचुअली. ओके, तो ये आपने इस तरह से अपना BP1 लिखना है. टू बिगिन विद देयर आर न्यूमरस कॉजेज ऑफ दिस फिनोमिना. ये आपको लाइन अपने कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऐसे की टाइप लिखनी है. ठीक है जी, तो आइए आगे BP2 की तरफ चलते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर BP2 लाइक दिस. The effects of this essay will continue to be very serious. After that, write your first point first of all, then secondly, then last but not least. Then conclusion. Then you have to write your conclusion like this. In conclusion, I reiterate that. After that, your ideas and your summary. After that, write your conclusion in just 2 sentences. Okay, so here is the format of causes and effects essay. Please students follow this format and you easily get 5 bands in IELTS writing task 2. Thank you for watching my video and please subscribe and like my channel to grow more. Thank you.